Hey guys, how's it going? My name is Aakash Singh. In this video, we will be looking at some types of iterations. So whether if you're in the class 10th, 11th or in the 12th, trying to understand the basics of while loop, for loop, I think this video will be very beneficial for you. The things which we are going to cover today are for loops, while loops, फॉर लूप एंड वाइल लूप के लिए जो कंडीशंस यूज होती हैं आप कैसे उनको अप्लाई कर सकते हो, हम लोग वो चीजें कवर करेंगे. हम लोग रेंज फंक्शन के बारे में देखेंगे. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट वी विल लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स सो दैट एवरीथिंग विच वी कवर इन दिस वीडियो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एट योर होम. So without any further delay, let's begin with the session by talking about a few basic necessities if you're trying to code or if you're planning to code in the near future. So there are three things which you need to keep in mind जब भी आप अगर कोडिंग कर रहे हो या फिर कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. There are three things. The first part is you need to understand the logic behind solving any kind of a problem. हो सकता है आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको मल्टीपल वेज में सॉल्व किया जा सकता है. सो यू हैव टू डिसाइड विच अप्रोच टू टेक. Second is understanding iterations. So in 11th and 12th, most of your questions will come from iterations, loops and conditional statements. And the third part which we covered in a previous video was data handling. How do you create data? How do you store data? अगर आपको text data store करना है, integer data store करना है, so on. So these things have been covered before, and in today's topic we will look at iteration. So in short, iteration कुछ नहीं होता है, सिर्फ it's called looping. जहां पर भी आपको कोई स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ता है उस चीज को हम लोग iteration बोलते हैं. So before we begin, if you find any question to be difficult, अगर आप एग्जाम दे रहे हो स्कूल में या फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है, सो देर आर अ सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स विच यू कैन फॉलो टू मेक श्योर कि आपका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली तो करेक्ट आ जाए. सो द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग व्हाट लॉजिक टू यूज. वंस यू डिसाइड व्हाट लॉजिक टू अप्रोच, आपको कौन से वे में सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद आप स्यूडो कोड लिखते हो. स्यूडो कोड क्या होता है? यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. आप जो भी कोड लिखना चाहते हो आप अपनी लैंग्वेज में पहले लिखो. उस टाइम पे आपको पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स यू माइट बी यूजिंग, कौन से इनपुट्स लेने हैं, कौन से लूप्स यूज करने पड़ेंगे आपको. एंड आफ्टर दीज टू स्टेप्स आर ओवर, ओनली देन मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज द प्रैक्टिकल. सो अगर आपके ये दो पार्ट्स एकदम करेक्ट है, सो यू माइट फाइंड कि आपका जो कोडिंग पार्ट है जहां पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, it might be correct. And even if this doesn't work, then finally you move on to debug. So we will look at this blueprint during solving some of the problems in this video. So let's look at iteration now. It is generally used जब हम लोग को कोई चीज़ों को repeat करने की ज़रूरत पड़ती है. Let's say I want to print hello 5 times. A normal approach, a simple approach would be कि मैंने 5 बार print statement लिखी है and I'm printing everything. But this approach is not actually quite good, right? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा है यहाँ पर. When you're coding, you're trying to solve a problem in the easiest possible manner, and I don't think कि this is the easiest possible way to print hello 5 times. So let's look at a new way on how you can print this thing 5 times. So let's not get into the coding part first. We will just try to understand by taking the pseudocode. Pseudocode मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि what should a iteration loop do. So यहाँ पर लिखा गया I want to print hello. So this statement will be executed. But कितनी बार ये execute होगी? It depends on this loop. यहाँ पर लिखा गया repeat 5 times, then you print hello. What if I wanted to print this 5,000 times? You just change this value to 5,000 and it will give you output of 5,000 hellos. Looking at another example जहाँ पर मुझे थोड़ी calculative चीज़ें करनी है, जहाँ पर मेरे को सिर्फ print नहीं करना है. I want to find the odd numbers between 0 and 100. Now a very simple approach, a naive approach would be कि मैं सारे odd numbers एक साथ लिख दूँ print करके. Again, this would be a very basic approach. There is no, it is a non-coding approach. यहाँ पर कुछ भी आपकी mental ability नहीं लग रही है. Looking at how a coder, an actual programmer wants to solve this problem is like this. So this is a pseudocode.
सो वी आर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द सूडो कोड पार्ट. हम लोग लॉजिक नहीं देख रहे हैं अभी. लॉजिक आप मल्टीपल वेज में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट लेट्स ट्राई टू टेक द मोस्ट सिंपल सोल्यूशन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी फ्रॉम 0 to 100. Now this list has even numbers, odd numbers and everything. But I want to print only those numbers which are not divisible by 2, which means you'll be printing odd numbers. So in this list, 2 won't be printed, 4 won't be printed, 6 won't be printed, right? So this is your loop which is creating a list of numbers जिस पे आपको looping करनी है, एंड उसके अंदर आप सिर्फ वही प्रिंट कर रहे हो विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. इसका ये मतलब नहीं है कि 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा. हर एक एलिमेंट यहां पर यूज किया जाएगा, बट प्रिंट सिर्फ वही हो रहा है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और विच इज ऑड. सो इन पाइथन लैंग्वेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइटरेशंस. फर्स्ट इज जहां पर आपको एक फिक्स्ड नंबर पता है, आपको पता है कि आपको 5 टाइम्स या 50 टाइम्स प्रिंट करना है. यू कैन यूज फॉर लूप एट दैट पॉइंट. देयर इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ लूप जहां पर हम लोग कंडीशंस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स. दैट लूप इज कंडीशनल लूप, बट हम लोग वो थोड़ा बाद में देखेंगे. So looking at for loop, the syntax of for loop is simple. If you have seen this before, अगर आप first time देख रहे हो, you have to understand a few things. For loop is a reserved keyword जो अगर आप Python में use करोगे तो Python को पता चलेगा yes this person wants to make an iteration, make a loop. तो यहाँ पर आपने for keyword use किया है. Next important part is you have to use a variable. Now this variable does not have a lot of value क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर variable का नाम देना है. It can be I, it can be X, it can be A, whatever you like. You just have to name a variable. This variable can or cannot be used inside the statements to repetition, for the repetition. इसके बाद the important part comes the sequence. As we have discussed in the previous example जहां पर हम लोग 1 to 100 numbers ले रहे थे, so that is called a sequence. We have covered that in data handling part when we talked about lists. So talking more about these sequences, all the elements inside a sequence. For example, मैंने कोई भी sequence लिया है जैसे A, B, C, D, E. Now they are all the elements inside a list. So now whatever variable I choose, oh I don't want to choose A क्योंकि वो match हो जाएगा. So let's take I. So ये for loop कैसे work करता है? Your variable whatever you choose, it will take values like this. The first value I will take is A. Then it will go inside to execute these statements. Once these statements are done, the value of I changes. अब once this element has been used, the next element will be used. I becomes B. Then again it goes inside the loop, executes these statements, and then goes back. So all the possible values of I will be used from this sequence. So let's try to understand this sequence part in a more intuitive manner. So जब हम लोग sequences की बात कर रहे हैं, they can be numbers, they can be text, they can be characters. So यहाँ पर मैंने थोड़े integer sequences का example लिया है. We will look at how to create these sequences. क्योंकि आप अगर Python में coding कर रहे हो, Python में programming कर रहे हो, there is a way that you need to create these sequences. आप सिर्फ type out नहीं कर सकते हो. अगर आपको 1 to 5 अगर एक sequence बनाना है, you can actually type it out like this. But what if you want to create a sequence which is 1 to 5,000? Or maybe 50,000. So that becomes very difficult by the use of typing. So इसके लिए Python में आपको एक function दिया जाता है called range, जहां पर आप कुछ input डालोगे तो आपको ये सब ranges मिल जाती हैं. So this range function creates a sequence or a list, and this list is generally used inside the for loop. Again, when we talk about for loop, we already know ये जो लूप है कितने टाइम के लिए रन करने वाला है. So let's understand how the
range function is working. Let's say I want to create a range like this 0, 1, 2, 3, or not 3. Let's just take this example. I want to create a range which always starts from 0 and ends at 2. So in Python language, when we are using the range function, हम लोगों को कुछ input देना पड़ता है. Let's say if we are giving n, तो यहाँ पर जो last element आएगा, that will be n minus 1. So it will start from 0 and it will go till n minus 1. So यहाँ पर since the input is 3, we won't go till n, we will go to n minus 1, which is 2. If I give the input 5, range of 5, it will start with 0 and move on till 4. Now this is a default value जहां पर आप बहुत ज़्यादा input नहीं दे रहे हो range को. हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि range हम लोग को create करनी है. Let's say 1 to 100. So I just say range 101. So this will create a sequence from 1. Actually, this will not create a sequence from 1. It will create sequence from 0. So what if we want to create a sequence from 1? So for that purpose, let's have a look at another way we can write the range function. Earlier we saw हम लोग सिर्फ एक input ले रहे हैं. जब हम लोग एक input लेंगे, it will start from 0 and go till n minus 1 with a step. Step मतलब आप कितने numbers add कर रहे हो एक साथ. जैसे 0, 1, 2, 3, 4. यहाँ पर n की value थी 5. Right? This is how the range function works. अगर आप सिर्फ एक input दे रहे हो, between each of these elements, the difference is of +1. What if I want to create a different kind of list like this? यहाँ पर सिर्फ even numbers की list create हुई है. So for that particular purpose, range function takes this form. We need to input a start value. We need to put a stop value as well as the difference between the consecutive elements. So let's take an example of this list. I'm starting from 2 and let's say I want to end till 16. So what should be the stop value? Should I put 16 or should I put 17? Again over here, ये जो stop value है ये आपके list में include नहीं होने वाली है. अगर मुझे यहाँ पर 16 चाहिए list के अंदर तो I have to input one more than that. So it will be 17. यहाँ पर जो step है हमारा that is of +2. So like this. So if I write range of 2, 17, +2, you will get this output. Let's have a look at another example, a slightly different one. Now, अगर आप arithmetic progression देखा है आपने पहले, so you might see that it is kind of similar. But in this case कि आपको सब लिखना नहीं पड़ रहा है, a Python function will be doing everything for you. So we are starting from 1. Our common difference between every element comes out to be 0, 1. Basically AP का जो difference है that is plus 0.1. So यहाँ पर हम लोगों ने 0.1 डाला. And over here I want to go till the value of 2. So over here I don't want to input 2 itself. I will put 2.1. Not exactly 2.1, you can say 3. Okay. So next type of range which you can create is a negative list. जहाँ पर मैंने negative number से start किया and it is going to 0. So start at -5. I say stop at 1 and step is +1. So +1, +1. Right? So I hope you understand how the range function is working now. Okay, so this was the sequence of your for loop. We are taking a variable, it can be any variable, it can be x, it can be I, it can be a. You need to have a sequence. Now हम लोगों ने just sequence के बारे में discussion किया. अगर आपको for loop use करना है for a specific number of repetitions, we need to create a sequence.
सो वी हैव अ फेयरली बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसका हर एक पार्ट क्या कर रहा है. वी जस्ट आर लेफ्ट विद दिस पार्ट. सो इट इज़ वेरी सिंपल इन नेचर. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि जो इन का मतलब है इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज इन द इंग्लिश लैंग्वेज. दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी फॉल्स, एंड दिस विल बी ट्रू. इट इज़ जस्ट चेकिंग कि अगर ये वैल्यू इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, अगर ये वैल्यू इस लिस्ट के अंदर है या नहीं. एंड दिस पार्ट इज चेकिंग कि ये वैल्यू इस लिस्ट के अंदर नहीं है. सो दैट इज ट्रू. तो फॉर लूप हम लोगों ने देख लिया, उसके बेसिक्स देख लिए. बट अगर आपको ये चीज समझनी है प्रॉपरली, वी हैव टू सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. So let's have a look at the first question. We are using the for loop. It is running for a specific number of times. आपके पास एक range भी है. Before jumping into the question, can you tell me how do you create this range without typing? So I have to use the range function. I start with 1. I go till 4. And the difference is 1. अगर मैं यहाँ पर ये 1 नहीं भी लिखता, by default the value is +1. So this can also be written as range of 1 to 4. Right? So now we have the range with us. We have a variable. So for each value from this element, from this list, हम लोग देखेंगे कि ये statements क्या कर रहे हैं. So first of all, हम लोगों ने for loop initialize किया, मतलब start किया. All the statements have been written. So the first value which I takes will be 1. So I की value 1 हो गई है. Now the loop goes inside this. क्योंकि 1 हम लोगों ने value already select किया, we can go inside. We have to print the value of I, which is 1. And in the next line, we again print 1 plus 1. 1 into 1. So this is the output. हमारी ये दोनों statements पूरी हो गई. Now we don't end the for loop. We just go back inside because यहाँ पर आपके 2 elements और बाकी हैं. So now I takes the value of 2. What would the output be now? Print the value of I. But यहाँ पर अभी I की value 1 नहीं रही. It has changed to 2. So I will print 2. Moving on to the next statement. I into I, which becomes 4. Again, so we don't end the loop here. We have to go back inside because still one element is left. Right? So in order to understand this, this is the last iteration जहाँ पर मैं 3 लिखूंगा. Sorry for the space. The first one is 3 and the second one is 9. Now, since we have finished all the elements, हम लोग सारे elements use कर चुके हैं. There is nowhere else to go. अब I कुछ और value नहीं ले सकता. It can only take 1, 2 and 3. Since that is done, हमारा जो loop है, that will end. So we are taking ranges. हम लोग list ले रहे हैं, list के elements ले रहे हैं. So जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ integer type list use करनी है. You can also use a string. So in the data handling part, we saw that strings are sequences. Just like list, strings भी sequences होते हैं. So जो अगर आप ये Python देख रहे हो, it is actually stored like this. Okay, so now can you guess what are the values जो ये ch variable है? Again, we can take any variable. जरूरी नहीं है कि ch. I can also take c. I can also take a, x, I, whatever you choose. Generally हम लोग strings जब use करते हैं, हम लोग ch use करते हैं because it stands for character. So ch की value क्या होने वाली है first? It will be p. What is the statement doing? Right. So the first value is p. Output में हम लोग को क्या लिखना है? Just print the value of ch. So p. The next value would be y. What would the output be? Y. Next is t. And so on. Till the time all of these values have been used by ch. मतलब इसका जो last part आएगा,
it will be n. Once all these elements are over, then your loop can finally end. So I hope you understood how the for loop is working now. We will solve a couple of questions on for loop in the practical video. So now we are done with the for loop. Let's move on to the second type of loop, जहां पर हम लोगों ने देखा था it is based on a condition and not on a fixed number. So this type of loop is called a while loop. It is a condition based loop. The syntax of while loop looks something like this. Again, ये जो while loop है, this is also doing the same thing. इस loop को आप use करके भी repetitions कर सकते हो, but इसका जो syntax है थोड़ा differ करता है as compared to for loop. So again, the keyword while is used. Now यहाँ पर हम लोगों को कोई भी sequence create नहीं करना है, हम लोगों को कुछ भी variable create नहीं करना है. There is a one simple thing. It is a logical expression. By logical expression, I mean you have to write a logical statement which can be something like this. N is greater than 0. जिसका जो result है वो true या false में आना चाहिए. Or maybe, so these all are called logical expressions जहां पर आप सिर्फ true and false में उसका result निकाल सकते हो. So once this logical expression is true, then आप loop के अंदर चले जाओगे. And the statements will keep on repeating. यहाँ पर आपको कुछ भी increment decrement करने का option नहीं है, वो आपको खुद करना पड़ता है. But till the time this expression is true, these statements will be repeated. So one fact about while loop is कि अगर आपका ये logical expression हमेशा ही true रहा, your loop will run for infinity. Now our PCs don't have enough computational capability to print infinite times, but it does print for a long time, जिससे आपका जो compiler है वो hang हो सकता है. So let's have a look at an example of how a while loop works. As we saw, this is the syntax, right? हम लोगों ने while लिखा. This is your logical expression जिसकी जो value है it can only be true or it can only be false. Then there are certain set of statements inside the loop. अगर आप देखोगे यहाँ पर एक variable भी है, we will have a look at why we took it. So first thing is initializing the counter variable. So why is a counter variable needed? हम लोग इसके अंदर जितने भी repetitions कर रहे हैं, it only depends on one condition. ये जो NO है it has to be less than 5, right? अगर मैंने NO को 1 लिया, it will always stay 1. It won't change, right? Which means कि this statement will always be true. So in order कि आपका जो loop है कभी ना कभी end हो, आप उसको खत्म कर सको, आपको एक counter variable को initialize करने की जरूरत पड़ती है. Counter का मतलब है you are actually using it to count something. Next is the text expression. Now text expression is again this, the condition which you are using, a logical expression. यहाँ पर logical expression is NO should be less than 5. Third part comes the body of the loop. Since we are using this counter variable, हमें कोई चीज को count करना है and we also want कि finally कभी ना कभी ये जो statement है this becomes false. So in order for that to happen, हम लोग इस counter variable को थोड़ा change भी करते हैं. So this is your body of the loop and inside this we are updating this expression. So since you have covered a bit about while loop now, I know you might be confused because the first time I saw while loop I was very confused, but this is how it looks. While statement होती है, एक expression दिया जाता है, अंदर कुछ statements होती है. One thing to always remember is this counter variable is very necessary. हम लोग for loop में कोई भी counter variable use इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पर एक पूरी list है जिसमें हम लोग को सारे elements use करना है. Once those elements are over, we can end the loop. But यहाँ पर loop को end करने के लिए आपको ये expression को change करना पड़ेगा. And this expression actually depends on the counter variable.
फाइनली जब आप इस काउंटर वेरिएबल को थोड़ा चेंज करोगे हर लूप के साथ, सो लेट्स हैव अ लुक हाउ दिस वर्क्स, राइट। नो की वैल्यू सबसे पहले थी 1. आई एम टेकिंग द वेरिएबल नो and I am looking at output. सबसे पहले the value of no is 1. Is this condition true? No is 1, 1 is less than 5, it is true. So we can go inside the loop. Once we go inside the loop, it is printing no square. No square is nothing but 2. After this statement is executed, the next statement says कि यह जो no की वैल्यू है आप 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो. Now no becomes 2. In for loop we were taking things like this कि आपने एक चूज किया, फिर उसके बाद सेकंड पे गए, इसके बाद थर्ड पे गए. यहाँ पर आपको एलिमेंट्स चूज नहीं करने हैं, आपको एलिमेंट को ही चेंज करना पड़ रहा है. सो वंस no is 2, it goes back over here. हम लोगों ने चेक किया, is no less than 5? Yes, it is. So it will print square of no, which is 4. Now what happens? No becomes 3. Again it goes there, checks it out, it becomes, output becomes 9. After that no again increases by 1, no 4 ban gaya. Now it goes here, it checks 4 is less than 5, true. Now we print 16. So now this is where our loop starts to end. जैसे ही no की वैल्यू 5 हुई यहाँ पर, राइट, हम लोगों ने 16 प्रिंट कर दिया, no की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई है. Now when it goes inside, it checks कि while no is less than 5, but यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है, this becomes false. So now if this is false, your loop finally ends. So you get an output something like this. Now आप एक प्रॉब्लम को फॉर लूप से भी सॉल्व कर सकते हो, आप वाइल लूप से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इन अबाउट hundreds and thousands of programming problems that I have seen, for loop generally works best when you already know कि मुझे एक लेंथ पता है, मुझे एक नंबर पता है. एंड while loop is used when you do not know when the loop shall end. हो सकता है आप स्ट्रिंग्स के साथ यूज कर रहे हो, आप टेक्स्ट के साथ यूज कर रहे हो, उस टाइम पे जनरली while loop यूज होता है. Looking at another example, this is a while loop. A condition has been given. While this condition is true, all the statements inside will be executed. The most important part is the counter variable. Counter variable हम लोगों ने start किया no as 10, right? So initializing the counter variable done. Test expression, that is also done. Body of the loop over here, and finally update the expression. This is the updation. Now you might be thinking why we are creating this loop, what is the purpose of this loop. We will have a look at the use of while loop in a practical video which will explain to you what is the basic difference between for loop and while loop. But I hope you have finally understood how this program works. Let's try to understand by taking the outputs and inputs. So first of all, no's value is 10. It goes here, it checks. It checks, is no greater than 0? Yes, obviously. Then print the value of no. The output will be 10. Now no's value decreases by 2 every time. So यहाँ पर 8 के लिए 8 आया. So finally ये 2 तक जाएगा, but our last part जहाँ पर no is being compared to 0 itself, it won't be right. So once this becomes 0, there is no output and your loop ends. So flowcharts is not a very new topic. हम लोगों ने बहुत types of flowcharts already देखे हुए हैं साइंस में, सोशल स्टडीज में, जैसे वाटर साइकिल हो गया, आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया. इनसाइड कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग फ्लो चार्ट्स जब मेंशन करें, इट मींस वी आर रेफरिंग टू द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे रन कर रहा है, व्हाट आर द इनपुट्स देयर, हाउ इज द इनपुट बीइंग प्रोसेस्ड, एंड फाइनली व्हाट इज द आउटपुट. In order to understand this, since we already know
evaporation होता है कुछ, condensation, precipitation. So you can consider it as input, process and output. So इसका भी एक diagram बन सकता है like this, right? Something on these lines कि एक फ्लो है जो आपको अचीव करना है, आप इनपुट दे रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो चीजें, एंड फाइनली देयर इज एन आउटपुट. Inside Python programming, when we create such flow charts, there are certain symbols associated. अगर आप कुछ start कर रहे हो, आप प्रोग्राम begin कर रहे हो, तो जो symbol आपको यूज करना पड़ेगा, it will be this. When moving from one part of a program to the other part, we start using arrows. It is fairly common knowledge कि हम लोग generally arrows यूज करते हैं moving from one part to another. जब भी हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं या फिर हम लोग स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करेंगे, उस टाइम पे this is the symbol which is being used. While processing, let's say मुझे 2 + 2 करना है, so I will write all these statements inside the process. Again, why we are using flowcharts is because कि जिस person को coding नहीं आती है, or maybe someone who wants to code something, starting with a flowchart will give you an edge because it makes you understand कि आपका जो code है वो कैसे काम करने वाला है. And finally, the decision symbol looks like a trapezoid or a kite diagram. How do you use these symbols is like this. So let's say I want to check if the temperature of a room or maybe something is above or below freezing point. Now this is Fahrenheit. ठीक है, so हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसको? We will take an input. जो टेम्परेचर का इनपुट होगा, हो सकता है वो 32 हो सकता है 100 हो सकता है 1 हो. We check the condition after taking an input, and inside the body of loop we just print if the temperature is above 32, we can say it is above freezing point. If the temperature is below, we can say it's below freezing point. In order to create a flow chart for this example, it will look like this. So please have a look at each of these parts carefully. हम लोगों का प्रोग्राम जहां स्टार्ट हो रहा है, we are using this symbol. After we start the program, what we do is we take the input कि temperature कितना है, we are taking the input from the user. So for that purpose we are using this diagram. The next step would be to check if the temperature जो हम लोगों ने just input किया वो 32 से कम है या 32 से ज़्यादा है. So यहाँ पर हम लोग कुछ decision ले रहे हैं कि checking it is a condition, right? So यहाँ पर हम लोग ये diagram use करेंगे. Now this decision can either be true or it can be false. So for each of these parts, आप दो different arrows बनाओगे and you will print different things. If the temperature is less than 32, you will print below freezing. Again, this is inside the input-output diagram or symbol. If this condition is false, then we will print it is above freezing. And finally, we just end के लिए जो सिंबल है that is this. It is not very complicated. आपको शायद थोड़ा टाइम लगेगा ये सिंबल्स लर्न करने के लिए, but if you are trying to write a pseudocode means you are writing in your own language, these flowcharts will be very beneficial. So let's have a look at another example जहां पर we are simply checking if a number is greater than the other. So how do we go on about it? First we start the program. Start का symbol है ellipse. We take input of two numbers because हम लोग को दोनों को compare करना है यहाँ पर. Taking the input in this block. After we have both the input, let's say I have 7 and I have 9. A is 7, B is 9. Now we are checking inside a decision making block, is A greater than B? So which is essentially saying is 7 greater than 9? So over here it says no, right? ये जो आप decision ले रहे हो, it can have two outputs, either it is true or either it is false. So that is the reason we have two arrows over here. So since it is no, we say that B is greater. But अगर मैं यहाँ पर 7 और 9 की जगह मैंने लिया A is equal to 11 and B is equal to 10,
So again the same process will continue, जहां पर मैं start करूंगा, मैं input लूंगा यहाँ पर, but yes आएगा and it will print that A is greater, and finally we just end the loop. So this is what flowcharts are. आप हर एक प्रोग्राम के लिए जिसमें लूप यूज हो रहा है, जिसमें लूप नहीं यूज हो रहा है, for each and every program you can create a flowchart. So these are the flowcharts for a for loop as well as a while loop. You can practice at your home. It is a very good thing if you know flowcharts, but as I told you before, the basics are very necessary. You need to understand how flowcharts work, but after your 11th grade, after your 12th grade, you will never use them, but it is a very good thing to know. So hi guys, my name is Aakash Singh. I hope you understood each and everything, but if not, you can post the doubts in the comment section. If you found this video to be useful, please do not forget to press the like button. You can comment, you can share it among your friends, and if you have these subjects, IP, CS, AI, in your 10th, 11th or 12th, please do not forget to subscribe to the channel. I'll be able to help you out with my videos. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.